Hi guys, good afternoon. I hope all of you are safe and sound. Welcome to this press conference that is online. Just want to say thank you to all the media personnel who have found time and are here. Thank you guys. And seriously, I hope all of you are safe and sound because आजकल सबसे ज़्यादा important है कि हम safe रहें. और जब हम घर पे रहते हैं तो सबसे ज्यादा जो हम चीजें देखते हैं कंज्यूम करते हैं वो है कंटेंट. और कंटेंट की अगर इंडिया में बात करें या शोज की अगर इंडिया में बात करें, यू कैन not talk about Shark Tank India. First of all, we are very proud that Shark Tank India जो पहला सीजन हमने किया है, it's doing really well. और हर जगह सोशल मीडिया पर या किसी भी फैमिली में, किसी भी गैदरिंग में इंडिया में शार्क टैंक इंडिया की बात हो रही है. It's become very popular and people are relating to it. It's लोग कह रहे हैं कि फैमिली के साथ शो देखना या टीवी देखना हमने बंद कर दिया था, लेकिन बहुत टाइम बाद एक ऐसा शो आया है जिसको हम फैमिली के साथ देखते हैं, डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से रीजन करते हैं, इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन होती है. और दैट इज अमेजिंग टू नो कि एक शो इतनी जल्द has reached so many people, is changing so many people's lives. और जो entrepreneurial इकोसिस्टम है इंडिया का, उसको क्या प्लेटफॉर्म दे रही है. तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी हमारे प्रेस के मेंबर्स हैं, अगर आपके पास हमारे जो शार्क्स हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए कोई भी सवाल हो या किसी के लिए भी सवाल हो, तो नीचे एक क्वेश्चन बॉक्स है, उसके अंदर अपने सवाल, बॉटम राइट पे एक क्वेश्चन बॉक्स है, उस पर अपने सवाल छोड़ दीजिए. टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरेक्शन हम लोग वो सवाल वहां से कुछ सवाल लेंगे एंड योर फेवरेट शार्क्स विल बी आंसरिंग देम. Now, the show is in the last week. Now, why is the last week so special? Because यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, आपको सातों के 7 sharks एक साथ टैंक के अंदर दिखेंगे, which is amazing. और अगर आप लोगों ने कुछ हमारा नेक्स्ट अपकमिंग प्रीव्यू देख लिया है, कुछ स्निपेट्स देख लिए हैं, तो आप देखोगे कि पीयूष बंसल जी लेंस कार्ट को पिच कर रहे हैं शार्क के सामने. एंड इट्स रियली एक्साइटिंग एंड कुछ बहुत ही एक्साइटिंग इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज भी लास्ट वीक में सामने आएंगे. एंड द फैक्ट दैट 7 sharks will be evaluating these businesses together. And what I've seen is that not just personal fan following of the sharks, their story, they've become inspirations, but इनकी camaraderie के ऊपर भी, इनकी दोस्ती के ऊपर भी काफी सारे चर्चे हो रहे हैं. How they are pulling each other's leg, how they do deals together, lots of these things, classroom banter से लोग relate कर रहे हैं. I'm very happy to see that there are different levels of correlating with the sharks who are just real life heroes because they're changing people's lives. Enough about just talking about them. Abhi time aa gaya that I invite all the sharks and to this press conference. So without any further ado, please put your hands together for all of the sharks from Shark Tank India season 1. Zordar taliyan. Can we have the sharks? There they are. Hi guys, so good to see you guys. मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ पिच करने आ रहा हूँ. Namita ma'am, Ghazal, Aman, Anupam sir, Ashneer sir, and Piyush sir. Guys, first of all, congratulations. Vinita ji is not with us, Abhi, but so good to see you guys. 6 of you. This is like a preview to the last week. How's it going? Great. Good यार, awesome to see you, Ran Vijay. आपने हमें यहाँ अकेला छोड़ के खुद दुबई भाग गए. नहीं, मैं कुछ ना, हमारे कुछ स्पॉन्सर कमिटमेंट है शार्क टैंक के जो मैं पूरे कर रहा हूँ. नहीं, अभी ऐसा हो गया ना, हमारी दुकान के बाहर कोई सेल्समैन नहीं खड़ा है. एग्जैक्टली. ये जब शोज जब चलते हैं ना, स्पेशली आजकल की दुनिया में, तो बहुत सारे एक तरीका होता है टू फाइंड आउट इफ इट्स डूइंग वेल और नॉट, और वो तरीका होता है मीम. ठीक है, अब ये हम सबको पता है कि हम सबका सोशल मीडिया सबको फॉरवर्ड जाते हैं एक दूसरे के. ठीक है, मेरे को आप लोगों के आते हैं, आपको मेरे आते हैं, एक दूसरे के आते हैं. लेट्स स्टार्ट विद सेइंग, मजा आ रहा है मीम्स देख के? आई डोंट थिंक इंडिया में और कोई शो है जिसके इतने मीम्स बने होंगे. I am thoroughly enjoying it. I think there is so much humor, so much content.
It's amazing to see how people imagine different stuff with that one dialogue said in certain perspective and that booming up. बहुत मुझे तो बहुत मजा आ रहा है memes पढ़ के. Because what कमाल happens की is ये भी बात है, कमाल की ये भी बात है कि इतना क्रिएटिव टैलेंट, पीपल आर सो फनी मोर देन द मीम. आप एक मीम देखते हो या एक पोस्ट देखते हो तो वो तो फनी होता ही है लेकिन उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं ना, दोस आर हिलेरियस. मतलब I just fall off my chair every time I go through some of these comments. नहीं, अभी कुछ ऐसे हैं जिसमें वो they've taken videos of movies. शाहरुख खान is turning around, उसमें अमन का फेस है, वहां पे वेट कर रहे हैं आप और मैं as अक्षय and रितेश देशमुख, और वहाँ मतलब it is crazy the level of creativity and the effort, and all of this happens because people are relating to it at different levels. You know, जो लोगों ने तो अश्लील को घाघरा भी पहना दिया भाई. दोगलापन वाला जो डायलॉग है यार, लोग गजब बेले हैं. मतलब इतना टाइम और टैलेंट तो है, बट टाइम भी है लोगों के पास. मतलब मैं अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में कभी लाइफ में नहीं सोच सकता था कि दीपिका पादुकोण के फेस की जगह मेरा फेस लगाया जाएगा, राइट? तो एंड द लेवल ऑफ एडिटिंग, राइट? आई थिंक आई वाज टेलिंग द शार्क टैंक टीम की है, कुछ लोग तो आप अपनी एडिटिंग टीम में रख लो. मतलब आपसे बड़ी एडिटिंग करी है इन्होंने. तो एक हेरा फेरी वाला एडिटिंग है, दैट इज नेक्स्ट लेवल. बहुत सही है, नेक्स्ट लेवल. मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हाँ जी. रणविजय, आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट आजकल जब मैं वो वर्ड सुनती हूँ ना, एक्सपर्टीज, मुझे कुछ हो जाता है. आप ऐसा नहीं बोलते आई एम आउट. अभी आपके घर में कोई if someone else uses the word, I feel like saying, hey, no, that's my word. और काम पे तो सब मुझे फार्मा बुला रहे हैं, तो थैंक्स टू अनुपम वो एक नाम स्टिक हो गया है, तो मेरे वर्क कॉलीग्स भी अब छोड़ नहीं रहे, सब लोग फार्मा बुलाते हैं. So let's start with one thing in a fun way. एक एक करके, accept your own meme. Just say one of those dialogues that is just stayed with you. For me, it's ये सब दोगलापन है, right? So आप usually what is the one thing that's standing out for you? And अमन वाला भी है, but मैं बोलूंगा नहीं because मेरे दो हो जाएंगे. आप usually, let's start with you. Piyush, you're on mute, I think. इनके पास बोर्ड के ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए आई एम आउट. That's a good one. Ajit ji, over to you. मेरा तो अमन वाला फेवरेट है, हम भी बना लेंगे. That's also amazing. नमिता जी? मैं तो सबको बोलती हूँ ये सब दोगलापन है. अच्छा, सेम रिपीट. अनुपम सर? यार मेरे को ये एक याद है, अश्नीर ने शब्द यूज किया था, वो मेरी फैमिली में भी बहुत यूज होता है, तो हम भी यूज करते हैं, तो बड़ा मजा आया मुझे सुन के. ये क्या वाहियात बातें कर रहे हो. तो ये बड़ा कॉमन वर्ड नहीं है वैसे, बट वी यूज इट अ लॉट इन आवर फैमिली एज वेल. So that's stuck in my head. Ghazal? My favorite is हम भी बना लेंगे. Now, be it anything, कुछ भी हम भी बना लेंगे. And Aman? अमन म्यूट पे आप प्लीज. मेरा फेवरेट वो है जो पीयूष करता है ना कि टेक्नोलॉजी है बेस्ट है, कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा सोचो. Okay, I'm very happy to see, वहां पर कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होते थे जब हम लोग आपको देख रहे थे, तो आप एक दूसरे का चोरी छुपे देखते थे ना, उसको भी लोगों ने कैप्चर कर लिया कि जब वो ऑफिस ब्रेक चाहिए होती है, चाय ब्रेक चाहिए होती है ऑफिस में. So now, just want to say that you're actually, I know this, but you're actually really good friends, and वो शार्क टैंक जब दुनिया का देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं वो लोग एक दूसरे से बात करते होंगे, लेकिन आपके बारे में ये चीज भी बाहर निकल कर आई है that as much as you're competing for these deals, right, and as much as you guys have your own businesses, but when it comes to helping these entrepreneurs, you go beyond your own selfish interest, and आप साइड में एक दूसरे के साथ भी वो डील्स कर लेते हो so that जो entrepreneurs आए उनका भला हो जाए. Was that a natural thing? Because I saw it happening, but for all the people who are watching, or how did it come about that so many times you just look and say, you know what, instead of competing with this guy, let's just get our pitcher what they deserve?
So कभी कभी Dhananjay, तो you'll be चॉइस भी नहीं होता है। surprised to know that 100% of my deals are actually in collaboration. So I don't have a single solo deal. Wow. And that just came to life, and it wasn't, I mean, that was not the intention. Before coming into the gang, I think हमें भी सबको ऐसे ही लग रहा था that we'll be also competing with each other because that's how it happens in Shark Tank US, right? But when I don't know, मेरे साथ तो ऐसे होता था कि जब मेरे को ऐसे लगता था और कोई भी इस आइडिया में बिलीव कर रहा है तो वो और स्ट्रेंथन हो जाता था नोशन के okay, you know, why do it alone? Let's bring them together and let's do the deal because more sharks, more expertise, and hence you know, the pitcher will get benefited with that. So I think for me that was a clear standout, and I was very happy at the end of it that I don't have a single solo deal because whatever I liked, there was somebody else also who liked the idea and pitched in. So I think that was great. बट मेरे को लगता है उल्टा बोला है आप। होता क्या है कि जब हम भिड़ेंगे तो सामने वाले को अच्छी डील मिलेगी, अगर हम मिल गए तो उसको सामने वाले को तो डील मिली नहीं ना, फिर तो हमारी अच्छी डील हो गई ना। तो हाँ, लेकिन अगर आप बट वो एक टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा इट कुड बी, बट द फैक्ट दैट वन ऑफ यू और टू ऑफ यू और फाइव ऑफ यू, वो इंसान के जो अलग अलग डिपार्टमेंट के काम है, देखो टेक्निकल, मशीन लर्निंग, एआई पीयूष सर ने संभाला, देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग अमन, एक आदमी को अगर 4-5 चीजें मिल जाए, फाइनेंस है, सब कुछ है, मतलब वो वापस जाते होंगे, सोचते होंगे हमें करना क्या है अब यू नो। सो it was amazing to see that, but now I have some questions pointed directly at you know, some of you. We'll start with this question for Aman and Namita ma'am. Feel free to answer. Shark Tank as a format is something that's come first time to India. Of course, the reason you said yes and all, both our interviews they've covered it, but people never experienced this before. How has your journey as Sharks been on the show from the beginning to now? You know, because beginning you could have been apprehensive, but now seeing this, and you know, Piyush sir was saying, you know, privately to me that now when we go to a party, you know, we've done our business, we've worked for 20-30 years in life, but अब लोग इस show के बाद हम जाते हैं तो फोटो हो रही हैं. So maybe a couple of those anecdotes. Over to you, Namita ma'am. Okay. So I'll go first. So it's been a phenomenal experience. I think all of us joined because we believed in the cause, and we're very happy that this has truly become dinner table conversation. It's cut across classes, gender, age barriers. So what we set out to accomplish has been accomplished. So that's a matter of great joy. And you were talking about the camaraderie earlier. When you're spending 14 hours a day for 30 days, you become good friends, right? And you also learn so much from each other. So so you can also get irritated with each other. Sorry? Itna time ek dusre ka spend karke, you can also get irritated. Oh yeah, we fought a lot too. There's no doubt about that. We had our share of fights and you know, behind the scenes debates. So no doubt about that. But that's also part of the learning, right? I personally was very happy that 48% of the ventures that got funded had women. So that was a brilliant statistic and something I'm very happy about. And I think when it comes to becoming, you know, so-called celebrities, you know, if we can use our voices, newfound voices, for the right causes and the right reasons, I think then that celebrity tag will truly be worth it. Aman? यहाँ पे भी नमिता और मुझे एक साथ ही डाला, तो कारण बट यू नो मुझे लगता है कि अभी भी अगर लोगों में इंस्पिरेशन नहीं आ रही तो लोगों में प्रॉब्लम है. मतलब फिर तो बहुत रहने दो, क्योंकि जब शार्क टैंक शुरू हुआ था ना तो इतनी डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन नहीं थी. मतलब जैसे हम कहते हैं कि पहले कहते थे लोगों को कि ये ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करो. अब फैमिली बोल रही है कि स्टार्टअप करो. एंड यू नो, कल मेरे डैड किसी से बात कर रहे थे, हमारा कॉर्पोरेट पार्टी थी, वहाँ डैड किसी से मिले, उसने बोला मैं अपना बिजनेस, यू नो हमारा ये बिजनेस है. तो डैड ने एज अ शार्क शुरू हो गए. अच्छा, तुम्हारे आपस में काम कैसे डिवाइड होता है, तुम्हारा ग्रॉस मार्जिन क्या है? तो मैं डैड को देख के बोला हाँ बॉस, ये तो अलग ही लेवल की डिस्कशन शुरू हो गई है, यू नो. तो अगर लोग पीयूष से नहीं सीखे कि बड़ा कैसे सोचना है तो रहने दो ना भाई. अगर रश्मि से स्ट्रेट बिजनेस डिस्कशंस नहीं सीखे तो भाई इट्स अ प्रॉब्लम विद यू. अगर अनुपम भाई से बिजनेस तहजीब, डिस्कशन, वे ऑफ टॉकिंग नहीं सीखे तो क्या सीखा है? तो मैं कह रहा हूँ हर एक शार्क से आपसे क्या सीखना चाहिए?
मैंने ही तो सिखाया इन सबको। मेरे से ही तो सीखा। नहीं, मेरे से भी मतलब अपना मैं नहीं बोलना चाहता, बट यू नो एवरी शार्क ब्रिंग्स इन देयर एक्सपर्टीज, एंड इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम, एंड इफ यू स्टिल वांट टू वॉच Saas Bahu, then you know something is wrong with you. Then you please go and watch Saas Bahu and leave, you know, this for people who have some brain. So there's, I think people should learn, and if they, you know, they have learned for sure, and that's a big thing for us. If we can play छोटा सा भी part हम play कर सके in India starting up, then we are all happy, right? We are giving back to the society. No, it's a great platform. The next question is for Ghazal and Piyush. You know, the show has brought about an entrepreneur wave in India, and as entrepreneurs yourselves, how much has the landscape evolved from the time you guys started your journey, and what does an entrepreneur go through today? Kitna badal gaya hai? So, Ranjit, I would say that the ecosystem has evolved significantly. I think you know, the mindset has evolved significantly. जब मैंने start किया था 5 साल पहले Mamaearth, I still remember a lot of our friends and even my family having a lot of doubts कि why are you leaving your full-time jobs, right? Why are you taking this risk? उसको फिर भी risk माना जाता था कि यार job is the safe place where you get monthly income. Startup करने को पता नहीं कितना time लगेगा, success मिलेगा नहीं मिलेगा, and hence people were afraid of starting up. But now with the amount of capital that's floating around, जितने VCs आ गए हैं, जितनी angel investments हो रही हैं, even the government supporting startup, right? And now Shark Tank coming into the picture and taking this conversation to every household, like you said, it's now a dinner table conversation. So I think that evolution is huge. It's exponential over the last 5 years, and it's only going to grow further from this, which is very promising. And I'm looking forward to more people now, you know, getting encouraged. उनको ज़्यादा, you know, I would say कि confidence आएगा अपने ऊपर कि if so many other people are doing this and they are getting successful, at least they should give it a try, and that's going to be a boost in itself. वो जो पहले होता था ना कि अरे मैं जॉब छोड़ के अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ, तो सब घबरा जाते थे. अब अगर कोई बोलता है मुझे कुछ खुद का करना, तो उसकी पीठ थपथपाते, बोलते बेटा हमसे कुछ इन्वेस्टमेंट ले लो, कुछ इक्विटी हमें दो, you know. बिल्कुल, and their ideas are taken more seriously. At least लोग सुनते हैं. पहले हमारे टाइम पे तो मतलब आधे लोग राइट ऑफ आइडिया सुनने से पहले ही कर देते थे कि यार I don't think it's the right thing to do. You know, आप लोग ठीक कर रहे हो, ठीक पैसा आ रहा है, you're good, live that life, live that comfortable life and move on. But I'm looking forward to that change coming in. Piyush sir? See, yeah, Ranvijay, when I started, my entrepreneurship journey started almost 12-13 years back. And वो ज़माना होता था कि I started from my house garage, कार बाहर निकाली और उसको ऑफिस में कन्वर्ट किया. और almost 4 साल तो of my entrepreneurship journey, there was no question of money, investment, equity. मुझे तो पता भी नहीं था, to be honest. जो थोड़े सैलरी देने के प्रॉब्लम होते थे कि बस 1 तारीख तक किसी तरीके से इतनी सेल कर ले कि सैलरी निकल जाए, right? And had to really convince people कि they should come and work at half their cost, जो उनको मार्केट में मिल रहा है वो काम. तो अब उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो अभी बहुत डिफरेंस है. अभी तो स्टार्टअप आइडिया आता है, लोग पहले फंडिंग की बात शुरू कर देते हैं, लोग इक्विटी को नेगोशिएट करते हैं. एंड तो वो आई थिंक इज अ ड्रास्टिक चेंज, बिकॉज 21 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में लोगों को फंडिंग मिल रही है. और मेरे को लगता है अगले 1-2 साल में जिस तरीके से शार्क टैंक में बच्चे ये शो देख रहे हैं, यू नो, एंड जिस तरीके के आइडियाज में देख रहा हूँ कि और वीडियोस आ रहे हैं इंटरनेट पे भी कि 14-15 साल की उम्र में हम देखेंगे कि फंडिंग होनी शुरू हो जाएगी. तो आई थिंक बहुत चेंज आ गया. उस टाइम पे तो हमें पता भी नहीं होता था फंडिंग, इक्विटी, ग्रॉस मार्जिन भी नहीं पता होता था. बस ये पता होता था ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करना है और किसी तरीके से गाड़ी चलानी है. I mean, what you're saying is exactly what the next question is about. It's become very popular on social media. Pe to it's, you know, these one-liners of all you sharks have become like a rage. The next question is to Ashneer and Anupam. You know, the response has been outstanding. Okay? It has become like everybody's saying, dining table conversation for families. What kind of impact has the show created according to you for the viewers?
for the youth of this country and for not just young people, anybody who wants to do a business? क्या impact है आपके हिसाब से? This is for Ashneer and Anupam both. I'll go first. I think देखिए impact तो काफी बड़ा है, जैसे सभी ने जान लिया. I think the memes and the social media attention we are getting, and Namita was saying, so-called celebrities, तो कहीं भी जाते हैं बहुत attention मिलता है. And I think that after KBC, जो एक intelligent show है जहाँ you get to learn, while it is also very popular show, very big show, one of India's biggest show, ये show मुझे लग रहा है इसमें potential है कि भारतवासियों और हमारे देश का नजरिया बदलने की. एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दैट. अगर आप देखें हिस्टोरिकली तो हम थोड़ा स्केप्टिकली देखते हैं बिजनेस को और बिजनेसमैन को. एंड दैट नीड्स टू चेंज. अगर आप रोजगारी चाहते हो तो जब तक बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट नहीं करोगे तो रोजगारी कहां से आएगी? If they are constantly under the lens of suspicion, रोजगारी कहां से आएगी? तो आई थिंक ये शो ने क्या किया है ना, वो बदल दिया है. एटलीस्ट इट हैज स्पार्क्ड द लाइट कि एंटरप्रेन्योर्स शुड बी सेलिब्रेटेड. उससे बच्चे अभी गेम्स की वीडियोस मिल रही है, मुझे फॉरवर्ड हो रही है. जैसे हम छोटे थे तो खेलते थे डॉक्टर हाउस. पीपल आर प्लेइंग शार्क टैंक. 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, और वो वीडियोस भेज रहे हैं. दे आर प्रिटेंडिंग टू बी शार्क्स. दैट इज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. तो आई थिंक उसी में बहुत कुछ हो जाएगा. तो सो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज चेंज. आई डोंट नो, Ashneer. Ashneer, brother. Yeah, no, मेरे को लगता है यार कि लोगों को समझ आ जाए कि फाउंडर होता क्या है और दिखता कैसे है और नॉर्मल इंसान जैसे ही होता है. आई थिंक दैट इज इनफ टू अचीव, राइट? सो आई थिंक वो ना, आप मेजरली स्टार्टअप्स के बारे में और एंटरप्रेन्योर्स के बारे में और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ते हो न्यूज़पेपर से, बट वो एक वन साइडेड कॉन्वर्सेशन होती है वो, कि जहाँ पे आपको लगता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यूनिकॉर्न, राइट, दिस इन्वेस्टर केम इन. बट इस शो में क्या है कि आप पिच करने आ रहे हो तो आप एक अर्ली एंटरप्रेन्योर, अगर आप शार्क हो तो आप एक वो जर्नी से जा चुके हो, तो आपको दोनों एक्सट्रीम्स देखने को मिल रहे हैं. एंड आपको ये लग रहा है कि यार ये बंदा इज लाइक द बॉय नेक्स्ट डोर, राइट? कि ऐसा नहीं है कि कहीं किसी खान से खोद के लाए हैं इसको. The next entrepreneur could be the boy who's living in the next house, right? So अगर वो normalization हो जाए एक founder का, that I think is a good outcome. Okay, now उसी से जुड़ी हुई बात है कि जो earlier funding थी, जो Ashneer कह रहे थे, हम जो पेपर में पढ़ते थे, it was very limited to IIT, IIM, pedigree sort of colleges and schools. तो औरों को लगता था कुछ करना भी है तो क्या, मुझे कौन देगा पैसे, मुझे कैसे फंडिंग मिलेगी, क्या मैं इस लायक हूँ, पहले मुझे वो जाके को फाउंडर लाना पड़ेगा. आई थिंक शार्क टैंक से ये साबित हो गया है कि वो जरूरी नहीं है. हमारे यहाँ सिर्फ 6 or 7%, आई थिंक वाज द नंबर, 7% ऑफ फाउंडर्स वर फ्रॉम पेडिग्रीड कॉलेजेस, जिसको टियर 1 इंस्टीट्यूशंस कहते हैं. 93% ऐसे थे जो छोटे शहरों से, गांवों से, नॉन टियर 1 इंस्टीट्यूशन से आए थे. तो ये बात भी साबित हो गई है कि आप भी बन सकते हो एंटरप्रेन्योर, अगर आप में क्षमता है और एक अच्छा आइडिया है तो आप भी खेल सकते हो गेम. Okay, now I have a fun question. अभी ये सबको पता लग गया है, मुझे तो ये पता ही है that all of you guys get along like a house on fire. आपके पास काफी सारे अब inside jokes भी हैं, एक दूसरे की आप टांग भी खींचते हो. That's very healthy to see, in a friend circle or in a group of people. तो जो आपकी पहली की जो शुरुआत की जो इंटरेक्शंस थी और जो अभी है उसमें ऑब्वियसली डिफरेंस है, बट ऐसे कोई मोमेंट याद है आपको जो ऑकवर्ड मोमेंट्स थे, या एक टाइम पे आपको लगा था ये क्या बोल रहा है या ये क्या बोल रही है, ऐसा कुछ कभी? एनी मेमोरीज ऑफ समथिंग दैट फनी और ऑकवर्ड हैपेंड एंड नाउ यू कैन लाफ अबाउट इट?
यार एक तो होता था कि जब 2 ग्रुप्स बन जाते थे शार्क्स के सेम डील के लिए, और स्पेशली अगर दूसरे ग्रुप में अश्नीर भाई हैं, तो फिर तो वो एक जो वॉर चलती थी एक्विटी कि ना, वो सपोज आपका पहला ऑफर 20% है तो कुछ पता नहीं वो 2% भी डील क्लोज होगी। वो कब फिर एक टाइम पे होता था कि भाई अगर अश्नीर के साथ हम कंपीट कर रहे हैं तो गिव अप मार देते हैं या साथ ही कर लेते हैं, वरना कोई फायदा नहीं है। उसमें एक डील बड़ी इंटरेस्टिंग थी जिसमें मैं और अमन बहुत हंसे थे, एंड आई थिंक नमिता भी थी हमारे साथ। नट जॉब एक डील थी जिसमें अश्नीर ने तोड़ा तो बहुत और हम मैच भी नहीं कर पाए, बट फिर भी द एंटरप्रेन्योर्स चोज अस। तो उस डील के बाद हम इतना हंसे हैं ना, और हमने कहा नहीं तो हम तो हार मान लेते थे। हम ये अनुपम और मेरे को चिपकाने के चक्कर में इनको अटक दी वो डील। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम करना चाहते थे, पर ये कभी कभी इतनी एक्विटी कम कर देते हैं कि हम इनसे compete नहीं कर सकते। That's true. Okay. Any पीयूष अपने ये पीयूष हम मत बोलिए, तू बोल, मैं तो लड़ लूंगा। guys, ब्रेन वायर्ड में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैंने अलग से ऑफर दिया था, फिर इन्होंने, अमन ने मुझे कहा कि भाई अलग से बताओ वरना हमारे साथ आओ, तो भी ये सब बहुत हुआ है। नहीं, but it was interesting, Ranvijay, to add to this, you know, they were every day and every deal was different, right? Yeah. We will be best friends in one deal, and in the next deal we might be the fiercest of competitors. There is, you know, one-upmanship on all of us, right? There is something different where, you know, you think about that deal very differently. There are some deals where we have refused to go with other people. There are some deals where we think, you know, yesterday there was a deal जिसमें मैंने बोला कि भाई जितना इसमें अश्नीर हेल्प कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, और कई डील्स हैं जिसमें हमने बोला है कि बॉस इसमें खाली एक ही बंदा हेल्प कर सकता है या हम सब मिलके हेल्प कर सकते हैं। और एक डील खत्म होती है ना, तो अगले डील में हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारा दिन कैसा जा रहा है। वहां पे आप भी होते थे, आपको पता है कि सुबह हमारी बड़ी गंदी लड़ाई हुई थी, अगली डील में हम लोग सब साथ चले गए। तो एवरी डे, एवरी डील, एवरी एंटरप्रेन्योर इज डिफरेंट। और हमारा भी, यू नो, बहुत बारी थोड़े से हम लोग भी थोड़े पागल है सारे अपने अपने। तो कब कौन सी डील में क्या खटक जाए, क्या बोला किसने, किस डील में कब कैसे बोला था जो इस डील में वापस आ रहा है, कुछ नहीं पता। तो वहां पे एट दैट 1 hour ऑफ डिस्कशन एंड डील मेकिंग, वी आर, यू नो, देयर माइट बी डिफरेंट रिएक्शंस फॉर डिफरेंट डेज एंड डिफरेंट इज व्हाट आई वांट। कई बार ऐसा होता था कि और देखो हमको ये भी जल्द समझ में आ गया था कि बहुत ज्यादा लड़ाई करेंगे तो नुकसान हमारा ही है, सिर्फ फाउंडर का फायदा है उसमें, क्योंकि इक्विटी उसकी कम जाएगी, हमको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो हमने पहली वो एक स्किपी में करके मल्टी शार्क डील कर दी थी, क्योंकि वो इक्विटी कम हो रही थी और कम हो रही थी, तो हमने कहा सब साथ में आ जाते हैं। और ये भी समझ में आ गया कि फाउंडर्स फॉर सम रीजन, और ऐसा यूएस शार्क टैंक में नहीं देखने को मिलेगा आपको, सिर्फ यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, फाउंडर्स फॉर सम रीजन वांट मोर शार्क्स। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप एक अकेले हो एक जगह और दूसरे सामने से 3 शार्क मिल गए, तो फिर वो कम पैसे लेके ज्यादा इक्विटी भी दे देगा, ज्यादा शार्क जहां। तो आई थिंक वी अंडरस्टूड दिस डायनामिक्स वेरी क्विकली। फिर हमें भी हमारा गेम बदलना पड़ा, क्योंकि नहीं तो हम ही नुकसान में रह जाते। Fair enough. Now you're talking about you know, some of the brands. आपने जैसे Skippy बोला. Can you guys tell me your top pick in terms of business ideas in season 1? एक अगर आप बता दें कि just name them. यार ये कमाल था। मेरे लिए एक तो ब्रेन वायर्ड है, जिस और वीवा लाइफ, दो हैं जो आई थिंक रेवोल्यूशनरी कुछ कर सकते हैं। वो जो कैटल स्मार्ट वॉच कहता हूं मैं उसे, बिकॉज आई जेन्युइनली थिंक जैसे ह्यूमंस में स्मार्ट वॉच इज बिकम द नॉर्म, वैसे ही, और ये जरूरी भी है आई थिंक फॉर एनिमल्स। और मुझे जो उस कंपनी का विजन लग रहा है वो कैटल तक लिमिटेड नहीं लग रहा। आई मीन इट कैन गो टू प्रीटी मच ऑल एनिमल्स। pets, everything, I think pets, etc. वो मॉनिटरिंग का जो तो वो काफी सही लगा। और वीवा लाइफ जिसमें वो, यू नो, क्योंकि ग्लूकोज जो शुगर मेजरमेंट है ये सब घर में होती है, तो उसका भी जो स्केल है, प्रोवाइडेड द टेक्नोलॉजी वर्क्स, व्हिच विल टेक टाइम, कैन बी वेरी, द इम्पैक्ट कैन बी वेरी बिग। Okay. Namita man, one standout business idea. Yeah, so I love the dialysis deal called the Renal Project. Me and Aman did that together, but I think it solves a real problem,
Because being in healthcare, I know how big dialysis is, and getting into tier 2, tier 3 cities at affordable prices. I love that concept. And of course, Rare Planet, because Indian handicrafts is something that I'm very passionate about. So these two are honestly, all of them are special, but these two are a little bit more special. Stand out. Not Farda for you? No, I mean Farda's there, but these two I love a little more. Piyush, I know why you're laughing, and I love Ollie too, the skincare range. I love their products. Ashni brother. Yeah, so मेरे को तो चलो नमिता को सुकून तो है. मेरे को तो revamp motors अच्छा लगा था. And I think after the show also, they उनका traction मेरे को सबसे ज्यादा दिख रहा है अभी भी. मतलब the way they Maharashtra government wants to come in, उनको land मिल गया है, right? उनके वहाँ पे they're moving very very fast. The other guy at least जो मेरे को अच्छा लगा वो मानस जो था, वो banana chips वाला, right? Because मेरी sister in law ने कैलिफोर्निया से उसके एक कोई इंडियन स्टोर से उसके बनाना चिप्स की फोटो भेजी, राइट? सो देन यू नो कि ये मतलब प्रोडक्ट बाहर तक और इतनी दूर तक पहुंच गया है. सो ये दो मेरे लिए अच्छे थे. अनुपम सर? Muted. I agree with Ashneer. I think मेरी कल ही बात हुई Revamp Motors से. I had a long chat with them last night. And वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. आदित्य ठाकरे जी बस परसों ही उनकी फैक्ट्री गए थे. He happened to be visiting Nashik. और उन्होंने शार्क टैंक के जरिए ही he found out about Revamp Moto. And he said कि मैं वहां जाके देखना चाहता हूँ ये क्या बना रहे हैं. And वहीं से उन्होंने फोन एक दो घुमा के उनके लिए he helped them with MIDC land and some funding and so on and so forth. Wow. So I think that's quite amazing जो शार्क हमारे पॉलिटिशियंस को भी रीच कर रही है और इन्फ्लुएंस कर रही है. बहुत कमाल की बात है. और एक दूसरी कंपनी है जो काफी लाइफ सेव कर सकती है. हमने काफी लोगों ने साथ में इन्वेस्ट किया. उसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, बट इट्स एन ECG ऑन योर फोन. स्पंदन. अभी टेक्नोलॉजी का तो प्रश्न है, वो काम करेगी नहीं करेगी, उसमें कितनी मेहनत और लगेगी, लेकिन उसको अगर ठीक से बन जाता है वो, तो आई थिंक इट इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग और लाइफ सेविंग, नॉट ट्रांसफॉर्मिंग इनोवेशन. तो उसको तो ऊपर मान के चलता हूँ. Ghazal? I agree with Anupam. I think that the one deal that I did which tops the chart is Spandan for me in preventive healthcare. Because I've seen so many people around me lose lives because they did not get to know about the heart problem in time, right? It's a matter of seconds or minutes, I would say, that a person can be saved from, these unfortunate health conditions that occur. So Spandan, I think it's very promising. I think the team is also very good. They're moving in the right direction. I've had multiple chats with them. Other than that, I think एक जो मुझे product बहुत ही पसंद है, the deal that I did is Sasbar, where I am in love with that product itself. I mean, I've shown it to so many people, for that matter. I'm hosting a party. I'm asking her to make customized hampers, share it with all my founder friends. It is unreal. वो काजू कतली देख के मैंने अपने बेटे को एक असली काजू कतली दी, एक नकली काजू कतली दी, and I said, tell me the difference. And he couldn't. He picked the soap kaju katli and, he wanted to eat that. She's a fabulous girl doing some really amazing work. I have a little bit expertise in that segment. I think I can, really help her grow faster. So these two for me stood out. Nice. Aman? मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल अंडरवेयर्स की है, और जो बमर है वो इतने अच्छे अंडरवेयर बना रहा है. ये प्रॉब्लम जो लाइफ में आई है वो बमर ही सॉल्व कर रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम. सो मेरे लिए बमर के अंडरवेयर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है. Jokes apart, I think everybody is
everybody has, every deal we've invested in are good, and I wish all the best to all deals and all entrepreneurs. What a nice diplomatic answer है रामन सर. आप दिल जीतने के लिए आप अलग अलग अपनी पर्सनालिटी में अलग अलग चीजें ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं सबको जीत लूं. Anyways, I have our friends in the media have been sending us questions, so I have the questions now with me. I'm going to ask you those questions right away. Sana Farzeen from Indian Express is asking a question है Mr. Anupam Mittal के लिए. Sir, you've already invested in multiple businesses. What difference did you find in entrepreneurs in Shark Tank India? Yeah, I think Shark, हमारा जो बाहर हम investment करते हैं, as I had said earlier as well, वो काफी tier 1 institution who are part of the VC ecosystem, तो उनको सब आता है. They know, they understand all the terminology, they know how to do a pitch deck, they know how to present. They are very well networked in the startup ecosystem. तो यहाँ पर जो देखा ना, ये थोड़ा अलग था क्योंकि जो profile of founders थे, they were very different from what I'm used to investing in. Generally speaking, of course, there are exceptions to every rule. यहाँ पर what I noticed the most, जो struggles थी ना founders की जो आए थे, सबकी एक कहानी थी और कोई मतलब लंबी कहानी थी कि इन्होंने इतनी संघर्ष की है जिंदगी में. या तो खुद को वो तकलीफ थी वो सॉल्व करने निकले थे, या उनके दोस्त के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो वो सॉल्व करने निकले थे. कोई ऐसे थे जो बहुत सालों से लगे हुए थे लेकिन अभी तक उन्हें ब्रेक नहीं मिला था. तो आई थिंक ये जो संघर्ष की कहानियां हैं, जो हमारे रियल भारत की कहानियां हैं, जो रियल फाउंडर्स की स्टोरी होती है, वो 2-3% नहीं जिन्हें फंडिंग मिल जाती है. 97% फाउंडर्स एंटरप्रेन्योर्स जो संघर्ष करते हैं, वो कहानियां हमें शार्क टैंक में मिली. तो मुझे वो फर्क लगा सबसे ज्यादा. Nice. Thank you, sir. Next question is from Sharan Sanil from Man's World. This is for Namita ma'am. Is there an entrepreneur you would love to co-shark with in season 2? Yes. I really liked a couple of the women who were very feisty and spoke their mind. So I liked Aishwarya Biswas of the skincare company Ollie, and I liked Jayanti Bhattacharya of Hemp and Company. I mean, they just were so feisty, and I think that they'll give Ashneer a run for his money. So lovely. So I would love Namita, to see those two fierce and feisty women as co-sharks with me. नमिता ऐश्वर्या को पीयूष के बगल में बिठाना. Absolutely. So Aishwarya and Jayanti would be awesome co-sharks, I think. जो ये है कि मेरी वाइफ ने कोई प्रोडक्ट ट्राई किया था ऑली का, तो उसको थोड़ा सा रैश हो गया था. तो तब से हमारा ये जोक चले जा रहा है कि तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी. मैंने बोला वो रैश ऑली से नहीं पीयूष से हुआ है, बिकॉज मेरे पूरे खानदान ने उसके प्रोडक्ट्स ट्राई किया, किसी को कुछ नहीं हुआ है. सो आई सेड पीयूष से दूर रहो, ऑली से दूर मत रहो. Oh, lovely. It's always fun and games with you guys. Okay, the next one is from Anshul from Dainik Bhaskar, Chandigarh. The question is for Ghazal. Why is there such a rising trend of organic skincare products and makeup? क्यों है? क्यों है? Okay, so see, I always say that consumers today are becoming more conscious, right? They are becoming more aware of what's going not just inside them but on them as well. वहीं से Mamaearth की शुरुआत हुई थी. Some of the conscious parents like us who are very paranoid कि हम बच्चे पे क्या लगा रहे हैं. And I think that trend has been on the rise, not just, I'll say conscious beauty in general, not just organic, but natural ingredients, even active ingredients को consciously आप कैसे use कर सकते हो so that they benefit you. Products having minimal number of ingredients in them so that they are more pure. That's a rising trend. And
it's not just in beauty, it's also in food, it's also in the other choices that we make, right? Be it choosing a car that's more environment friendly, to the food which has lesser preservatives, lesser calories. तो I would say कि वो consumer ही evolve हो रहा है, वो ज्यादा अवेयर और कॉन्शियस हो रहा है, वो अपने डिसीजंस बहुत माइंडफुली और मीनिंगफुली बनाना चाहता है, और वो अपनी जो परचेज पावर वाली डिसीजन होती है उसको भी बहुत ही केयरफुली यूटिलाइज कर रहा है. And that's where we see across all categories, this conscious consumer who's rising and making those purchase decisions. Thank you so much. The next question is for Mr. Piyush Bansal from Jessica, who's from Rolling Stone, India. Valye, what are your top 3 tips for entrepreneurs? I think one is, I would say, ki just focus on problem solving and stay persistent if the problem is big. And I think then the scale and the opportunity can also be equally large. Second, I would say is try, not get overwhelmed with all this funding and equity and all of this too much, because it can get to your head, and there are a lot of advisors, on this piece today. But I would say if you are solving something really good, then rest everything will fall in place eventually. तो इससे थोड़ा overwhelm ना हो, customers के साथ time spend करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, and अपने solution को optimize करें. And तीसरा, I would say invest in, हमने Shark Tank में बहुत बार देखा, सबने बोला आप co-founder लाइए. तो मेरा तो यही learning रहा है कि अकेले कुछ भी बड़ा करना मुश्किल होता जाता है, स्पेशली अगर बहुत ही बड़ा करना. तो जितने आप लोगों को साथ जोड़ते जाएंगे, और एक आपको नजर रखनी पड़ेगी हमेशा, बिकॉज जब आप रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं तो यू कैन हायर, मे बी यू हायर 10 पीपल, बट उनमें से एक जरूर कोई रॉक स्टार होगा, एंड उसको आपको स्पॉट करना है एज एन एंटरप्रेन्योर, और उसको पार्ट बनाना है अपनी जर्नी का, अगले 1-2 साल के लिए नहीं, अगले 10 साल के लिए. एंड वहां पे शेयरिंग बहुत जरूरी होता है, राइट? अगर आप सोचे कि सब कुछ मेरे को ही मिल जाए, मैं ही सब कुछ कर लूंगा, तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं. तो शेयरिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट, आई थिंक, in building something big. Fair enough. Thank you for your answer, sir. Next सवाल है Mr. Aman Gupta के लिए. Aman, are you ready? क्या तुम तैयार हो? Utsav Khanna from Best Media Info. If you could change one thing about the format of the show, except for Ranvijay, what would it be? No, I would not change Ranvijay. He's playing a great part. But जब हम लोग sharks उनकी तोड़ते हैं या कुछ करते हैं या advice देते हैं, तो Ranvijay, at least there is, they feel that somebody is outside there helping them or consoling them or changing the direction of the tone. So I would not change Ranvijay also there. But yeah, one thing in the format of the show. Yeah, if one thing, I think clothes for us, right? So that's what is the biggest problem for all of us, that we are not changing too many clothes. People people said that boss, तुम इतने पैसे शो में लगा रहे हो, थोड़े पैसे लगा के अपने लिए कपड़े खरीद लो. So jokes aside, one thing I would say is that apart from the clothes, is that the entrepreneur should be a little more, maybe the next season they come out better educated, because there were a lot of times when we had to, in fact, tell them what is the right valuation. They were Atpatan, 1200 crore ki valuation, 300 crore ki valuation, 400 crore ki valuation. So I think by next season, entrepreneurs will be a little more seasoned, and because they know if they do Atpatan, then their Ashneer Bhai will not spare them. So they will come out little better prepared in terms of business and business acumen, I guess. That is what Ashneer Bhai will not spare them. Okay, so let's ask the next question to Ashneer Bhai only. This is from Sonali from TV9. Your favorite pitch that you look forward to working with? वर्किंग विद तो बड़ा मुश्किल है, मतलब हम अपना काम करें या उनका काम करें. मेरे को लगता है कि
अगर किसी की एक्सपेक्टेशन ये है कि हम उनके साथ लग के काम करने वाले हैं तो वो थोड़ी मिसप्लेस्ड एक्सपेक्टेशन है। एंड मैंने किसी को दी भी नहीं है और मैं अभी भी नहीं कमिट करना चाहूंगा। हम पैसे से सपोर्ट कर सकते हैं, हम गाइडेंस से एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम सपोर्ट कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे एज अ फाउंडर बिजनेस तो आपको ही चलाना है। तो मैं तो सबको यही बोलूंगा कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख के आए, पैसे की एक्सपेक्टेशन रख के आए, कनेक्ट्स की रख के आए और गाइडेंस की रख के आए, बट एग्जीक्यूशन आपका ही काम है। So if you don't have to like take that away, the working part and just the guidance and the mentoring, and so your favorite pitch would still be like you said, revamp. No, I'm slightly more enthused about food, so I would put more effort with Beyond Snacks. मेरे को लगता है वो लड़का थोड़ा ज्यादा आगे जा सकता है। रिवैम्प मोटर वाले खुद ही वो तेज हैं, एंड वो 4 लोग भी हैं, ये एक सोलो फाउंडर था, तो आई थिंक उसके साथ मैं थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड कर लूंगा। Nice. Next question is for Namita ma'am. Nikita from Indian Express is asking, how do you think the reach of Shark Tank India is going to benefit people from small towns to take up their business ideas and to execute them? You know, definitely this is a term that not a lot of people in small towns knew, right? And it's made it something that people can aspire for. It's given people the ability to dream big. And, you know, I read somewhere that now mothers are not just saying doctor bano, engineer bano, they're saying beta entrepreneur bano. You know, so this is great for the country because at the end of the day, entrepreneurs are nation builders, they're job creators. So I think if this is something that's reaching the small towns through our stories and our founders that we have presented on the show, it's mission accomplished. Perfect. I just want to say to our friends in the media, these questions are very, very nice questions. You know, it seems like all of you have actually watched the show, and then, you know, these are coming from very organically. The next question is for Mr. Anupam Mittal. Abhimanyu from HT Digital asks, does it feel weird to be known as Shark Tank's Anupam Mittal instead of being known by your own companies, which you built over so many years? It's a good question. The interesting thing is, it's not even being known as Shark Tank Anupam Mittal. अभी हम जाते हैं, I go to the gym, पीछे से लोग shark करते हैं, hey shark. तो सिर्फ shark बोलते हैं ना, अभी नहीं बोलते हैं. तो अभी तो ऐसी पहचान हो गई है. But look, यार, I think it's an exciting phase. I would be lying if I would say otherwise. ये जो attention हमें मिल रहा है और ये जो celebration हमारी हो रही है, मुझे तो ये लग रहा है यार अगले हफ्ते के बाद क्या होगा. So no, in all honesty, I'm enjoying it. I think you know, it's great for our brand, it's great for our personal selves, and of course it's great for the entrepreneurial ecosystem. तो थोड़ा अजीब है लेकिन मजा आ रहा है. Thank you. The next question is for Mr. Piyush Bansal. Aarti from Dainik Jagran पूछ रही है, you supported Jugadu Kamlesh, and that's actually really inspiring. I also thought it was very sweet. The hug that I got from him, I got multiple hugs by the way from him. मैं और वो तो मतलब वो और उसका दोस्त और मैं, हम लोग बस डांस कर रहे थे उसके बाद. According to you, how do you think you can encourage entrepreneurs? See, I think अगर कमलेश को देखें तो मुझे लगता है कि वो entrepreneur, आप एक सवाल भी पहले पूछ रहे थे कि मुझे जो लगता है entrepreneur wise, तो pitch wise, idea wise could be anything, but entrepreneur, he is the one who checks all my boxes. Wow. So, and he's the one I am learning most from, and I agree with Ashneer, सबके साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते, पर वो एक है जिसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और मजा भी बहुत आ रहा है क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी है बड़ा कुछ करने की. तो आई थिंक how can we support is by supporting entrepreneurs and not just the idea sometimes. And I genuinely feel कि किसी को नहीं पता कि कल क्या बनेगा, right? और कितना बड़ा बनेगा, but eventually बार बार निकल के आ रहा है. अभी अश्विनी ने भी बोला कि जो इंडिविजुअल होता है ना, जो एंटरप्रेन्योर, सब कुछ उसी पे रेस्टेड है. यहाँ पे आप जितने भी शार्क्स देख रहे हैं वो इंडिविजुअल में दम है. तो आई थिंक इफ वी कैन स्टार्ट बैकिंग पीपल, एंड आई थिंक ये काफी जो इन्वेस्टर्स भी हैं बड़े बड़े,
कईयों की फिलॉसफी होती है कि वो एंटरप्रेन्योर्स पे बेट करते हैं। और आपने देखा होगा जब आप सीरियल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, जब आप एक बार काम कर लेते हैं तो लोग आपके आइडिया को नहीं, बस आप ही को पैसे दे देते हैं कि तू जो भी करेगा आई विल स्पेंड। तो आई थिंक इफ वी कैन बेट ऑन पीपल मोर एंड मोर इकोसिस्टम, बिकॉज कई लोगों को वो एक्सपोजर नहीं होता। देखो हम बाहर ट्रैवल कर लिए, पढ़ाई अच्छी कर ली है, एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट में, देखते हैं अच्छी कॉफी शॉप में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो हमें पता होता है कि क्या ब्रांडिंग है। बट दैट वो हर चीज सीखी जा सकती है। आई थिंक अगर एंटरप्रेन्योर सीखना जानता है और ये जानता है कि मुझे सब नहीं आता, तो वो फिर और उसमें वो परसिस्टेंस और विजन है ना, तो वो आगे निकल जाता है। मुझे भी कुछ नहीं आता था, अगर आप देख लेंगे हमारी जो लेंसकार्ट की हालत थी जो अभी, तो शायद मेरे भी कपड़े फाड़े जाएंगे शार्क टैंक में। और वो उसका एक ग्लिम्स इस सरप्राइज वी गोना सी। there is what we did on Shark Tank is we kind of created our own time machine where we went back in time, and Piyush actually did pitch to you guys, but उसके बारे में let people go and enjoy. उसमें मेरे को एक चीज बड़ा लगा कि जो चीजें मैंने खुद भी क्रिटिसाइज की कभी कभी, वो सारी मुझ में भी, मेरे पे भी कोई क्रिटिसाइज करता, मुझे ऐसा लगता है। तो आई थिंक वो हम भूल जाते हैं कॉन्टेक्स्ट की, बंदे में दम जैसे अमन कहते हैं, तो वो सब हो जाता है। बिल्कुल। Alright, last question is from Neelam, जो है from Hindustan. The question is addressed to all the sharks. What will you miss the most about the show? I mean, feel free to say it's me, but you know, आपके personal कुछ हो सकते हैं. It's okay. The backstage fun and Namita's food every day. Oh, Namita's snacks, my God! वो पूना से शुरू रात के 3 बजे निकल जाते हैं, सुबह 7 बजे की शूट के लिए, वो पूरा ऐसा एक जमघट स्नैक्स का सबके लिए। Not just us, even the crew. मेरा जो crew था वो भी बोलते कि वो नमिता साहब के स्नैक्स पहुंचे नहीं अभी। No, I think there was a lot of ragging backstage. You know, things like Aman's humor, Piyush ragging me all day. I think those are the kind of things that just made me laugh so much. And I think I'm going to miss that laughter a lot, because definitely otherwise, Aman's humor, yaar. Aman's humor I miss. Aman's humor we miss. Yeah, and you know, Aman's office humor में I बैठी miss. को भी लाइफ बहुत सीरियस है MQO में, वहाँ बहुत मस्ती की हमने backstage. I really miss that. काम करते हुए एंजॉय कैसे करना है मैंने अमन से सीखा है वैसे शार्क टैंक में। मतलब ही इज अ फन गाय, मतलब 24 आवर्स मस्ती करा लो और काम भी कर लो, मतलब पता नहीं चलता। पीयूष तुम कम नहीं हो। नहीं यार, कहाँ, तुमने मुझे इतना सताया है, मैं अभी उस पे एक ब्लॉग लिखने वाली हूँ, पीयूष एंड हिज बैकस्टेज एंड अनुपम की अदा जो है, अदा जो अनुपम का एक वो है, वो तो कोई कॉपी भी नहीं कर पा रहा है। मतलब people don't know अनुपम सर की मिमिक्री के स्टैंडर्ड्स, गाइस भूल गए, like what he didn't do. नहीं यार, मैं तो ये सोचता हूँ यार, सबका एक अंदाज है और सबसे इतनी सीख मिली है, ऑल द को शार्क्स, कि हमने तो सोचा ही नहीं था। मैं जब आया था शार्क टैंक पे, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी ज्यादा। अभी क्या यूएस शार्क टैंक इतना बड़ा शो गया, यहाँ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट स्लोली समझ में आया यार। मतलब इफ आई कुड जो क्षमता है और जो खासियत है एवरी शार्क, दैट फॉर मी हैज बीन एन इनक्रेडिबल लर्निंग। एंड मैं तो कभी इनका काम कर ही नहीं पाऊं, बट इफ आई कुड बी अ फ्लाई ऑन देयर वॉल for a week while they are working, I would give anything to do that. They're just amazing people. और जो एक स्टोरी आप देख लो, जो भी इन्होंने बनाया है, कोई मजाक नहीं यार। 3 साल 5 साल में 10 साल में, I mean, I don't think Sony could have chosen a better panel, and I mean that from the bottom of my heart, and that is what I will miss the most. Wow. Ashneel, brother, don't I mean, for now we can say we'll miss Ghazal because she's not here, and we No, I wasn't missing Ghazal in any case, so that's fine. so नहीं यार, मेरे को लगता है कि जो मस्ती पीछे करते थे ना बीच में,
and the whole travel and the whole what you see as 15-minute pitch, right? But जो उसके पीछे 1 घंटा है और उसके बाद आधा घंटा वेट कर रहे हैं, उसके जो वैनिटी वैन में जाके वेट कर रहे हैं, I think that was also a good experience, very different experience, not something we are used to at least. तो I think that I will miss. बाकी देखते हैं अगले साल बुलाते नहीं बुलाते लोग, ये भी तो पता नहीं है, तो क्या पता ये मिस क्या कर रहे हैं, फिर हम बोलेंगे यार बेकार था सब, हम अब मैं खुश हूँ. यार अंटुराज मिस करेंगे यार. मेकअप वाला चाहिए अभी साथ में, हेयर स्टाइलिस्ट चाहिए, 2 बॉडीगार्ड चाहिए. मन ने सब रख लिया है. I want to put it on record that the men took longer to get ready than the women. No, That's because you are. Yes, it's a That's fact. because you're Namita. That's because you arrived early. No. Last minute Entourage की बात कर रहे हैं ना, punctual. entourage, makeup, hair, ये जो entourage की बात करें, इसे मुझे भुगतना पड़ा because the men took longer to get ready than the women. Please minute and record this. हम दिल्ली वाले हैं, हम उस बस पे नहीं चढ़ते जो पहले आती है, हम उस बस पे चढ़ते जो पहले पहुंचा देती है. All right, guys. Any plans of getting together in different cities and wherever you are and watching the last few episodes together? ऐसे कुछ आप लोग कर रहे हो? Any plans? Because I've seen you guys on Instagram. मुझे तेरे को बुलाया नहीं लग रहा है. नहीं मुझे बुलाया. मैं पार्टी के बाहर फ्लायर बेच रहा हूँ. Upgrade. 4 तारीख को मिल रहे हैं हम सब. Vijay, we've been watching it together. We watched one episode in Bombay 2 weeks back. Then, day before yesterday, we watched the Kapil Sharma show, the Delhi guys. We did it together. Nice. So, how was that we experience? keep, amazing. We loved it. To watching something together. I don't think it could have added any more masala to it. Like, it was a very different feeling. It was surreal to watch it together. And यार कपिल शर्मा यार, it doesn't get bigger than that. I don't think किसी ने भी सोचा होगा यार कि हम जाके वहाँ पे ऐसे तोड़ देंगे. नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, Piyush's family was there. Piyush's family was there. Ashneer's family was there. Ghazal's family was there. Their parents were there. My parents were there. So imagine all of us watching it together. It was fun. And now we are watching the last show on Friday together. Awesome, guys. Have fun, stay safe, and thanks a lot for not just being part of Shark Tank India, but also in your own ways, you've done amazing things for the entrepreneurs in the country by setting examples, by doing well in your own businesses, by being inspirations, and like Piyush just said that looking back, a lot of these things that I'm picking on, these new entrepreneurs, वो मेरे में भी थी वो खामियां. तो इससे जो नया बंदा है उसको भी लगता है कि ठीक है यार, over a period of time मैं अपनी ये चीजें भी I will overcome these. And the kind of insights that people are getting, उनको self realization हो रहा है कि यार मैं business में घुस रहा हूँ पर ये चीजें पूछते हैं, ये चीजें होती हैं business में, एक अच्छा partner चाहिए, be good at what you do. A lot of these learnings, and frankly, just being around you guys on the set, all 7 of you, was a learning experience, not just for the entrepreneurs, but as crew, as people who just, we just wanted to hang around you and just get some विशेष टिप्पणियां कि अच्छा you felt really good, so thank you so much, and hopefully तो अगले सीजन में आप आ जाओ पिच करने. सर मैं आता हूं, मैं अपने शेयर बेचने आऊंगा. Like I told you guys. Thanks a lot, guys, and thanks to our friends in the media for taking our time and lovely questions. Thank you everyone. Namaskar. Stay safe, guys. Best of luck, and have a great day.